चीज़ें समझाऊंगा। मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर कामरान कुंडी और आप मुझे देख रहे हैं रिसर्च वीडियोस के मुतालिक, डेटा एनालिसिस के मुतालिक। और जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस शहर का नाम, उस कंट्री का नाम, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे कहाँ से या किस शहर से या किस कंट्री से देख रहे हैं। आज मैं आपके सामने लाया हूँ दो बहुत ही आसान चीज़ें, एक को पैरामीटर कहते हैं और दूसरे को स्टैटिस्टिक कहते हैं। अगर आप पैरामीटर और स्टैटिस्टिक के अल्फाज पे गौर करें तो पैरामीटर के लफ्ज़ का पहला लेटर पी है और इसी तरह स्टैटिस्टिक के वर्ड का पहला लेटर एस है। और पी जो है स्टैटिस्टिक के अंदर पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है और एस जो है वो सैंपल के लिए यूज़ होता है। अब आप देखें, इत्तिफाक की बात है, पैरामीटर का पहला लेटर पी है और पॉपुलेशन का पहला लेटर पी है। इसी तरह स्टैटिस्टिक का पहला लेटर एस है और सैंपल का पहला लेटर एस है। तो अब हम आसानी की खातिर पैरामीटर और पॉपुलेशन में से कह देते हैं कि पी स्टैंड्स फॉर पी, पैरामीटर स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन, पी स्टैंड्स फॉर पी, सो पॉपुलेशन स्टैंड्स फॉर पैरामीटर। और इसी तरह स्टैटिस्टिक और सैंपल के अल्फाजों को अगर आप देखें तो एस फॉर एस मीन्स स्टैटिस्टिक इज़ फॉर सैंपल, पैरामीटर इज़ फॉर पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक इज़ फॉर सैंपल। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये यूनिवर्सल रूल है। पैरामीटर इज़ फॉर population because P is for P, statistic is for sample because S is for S। ये समझने के बाद अब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन की कोई भी करेक्टरिस्टिक होगी तो वो पैरामीटर कहलाएगी, सैंपल की कोई करेक्टरिस्टिक होगी तो वो स्टैटिस्टिक कहलाएगी। दोबारा सुने, तवज्जो से सुने, गौर फिक्र के साथ सुने। पॉपुलेशन की कोई भी खसूसियत, पॉपुलेशन की कोई भी करेक्टरिस्टिक अगर होगी तो वो पैरामीटर कहलाएगी। सैंपल की कोई भी खसूसियत, कोई भी करेक्टरिस्टिक होगी तो वो स्टैटिस्टिक कहलाएगी। पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन, पॉपुलेशन का मीन पैरामीटर कहलाएगा और सैंपल का मीन स्टैटिस्टिक कहलाएगा। पॉपुलेशन का मीन पैरामीटर कहलाएगा, सैंपल का मीन स्टैटिस्टिक कहलाएगा। इसी तरह पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन वो पैरामीटर कहलाएगा और सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैटिस्टिक कहलाएगा। पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन वो पैरामीटर कहलाएगा और सैंपल का मीन या सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन वो स्टैटिस्टिक कहलाएगा। इसी तरह पॉपुलेशन का मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस ये पैरामीटर कहलाएगा और सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन या वेरिएंस स्टैटिस्टिक कहलाएगा। दैट इज सो मच सिंपल, दैट इज सो मच सिंपल। थैंक यू सो मच। Okay, brother, are you from Turkey? And bro, what language are you speaking? I hate you. Why you hate me? I am a teacher and I teach online, so there is nothing to hate me. I know that teacher can be a very noble and teacher can be a very pious person. So let me switch to English. Yes, I welcome you at this channel. This is the channel where you search for statistic, where you search for research. So we were discussing two important terms. One was parameter and second one was statistic. Hello brother, are you listening to me? Please, I switched to English so that you may understand the English. You may not understand the Urdu, but you may understand the English. So let's talk into English. We have two words. One is parameter and second one is statistic. One is parameter and second is statistic. If you see parameter,
the first letter of parameter is P. The first letter of parameter is P. And if you see the statistic, the first letter of statistic is S. First letter of parameter is P and the first letter of statistic is S. And in statistic and in research, P stands for population and S stands for sample. In research, in statistics, P stands for population and S stands for sample. So P for population, P for parameter. It means that parameter is the characteristic of population. P for P means that parameter is for population. P for parameter, P for population. It means that parameter is the characteristic of population. Parameter is the characteristic of population. Parameter is the characteristic of population. Similarly, in statistic is for sample. Statistic is for sample. S for S, which means that statistic is for sample. So the characteristic of population will be called as parameter, while the characteristic of sample will be called as statistic. Again, characteristic of population will be called as parameter, while characteristic of sample will be called as statistic. So if you are checking mean of population, so mean of population is parameter, while mean of sample will be statistic. Mean of population will be parameter, while mean of sample will be statistic. Similarly, standard deviation of population will be parameter, while standard deviation of sample will be statistic. And variance of population will be parameter, while variance of sample will be statistic. So we have three things: mean, standard deviation and variance. Mean, standard deviation and variance. So mean, standard deviation and variance of population will be called as parameters, while mean, standard deviation and variance of sample will be called as statistic. I hope you got this concept, what is parameter and what is statistic. If you have any question, you can reach out to me at this channel. At this channel, I teach statistics, I teach research, and I teach psychometrics. So if you have a question, please leave a question. And from where you are watching my videos, please mention the country name or mention the city name or mention the district name. I love you all people who watch my videos, who listen to me, and I hope it helps you in your thesis, because my lectures are very relevant to your thesis and your dissertation. Thank you so much.